हेलो गाइस, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल टेक्निकल बॉडी ANA। आज हम डिस्कस करेंगे उबंटू कैसे इंस्टॉल करते हैं, अबाउट हाउ टू इंस्टॉल द उबंटू विथ इरेज ऑल डिस्क। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम टाइम लेंगे नहीं। इट्स टेकिंग ओनली 5 to 10 minutes to install the Ubuntu through the GUI. So let's do it. सो दिस इज़ माई विंडोज़ सिस्टम, जो हमारा सर्वर है विंडोज़ का, एंड आई हैव दैट बूटेबल उबंटू पेन ड्राइव. You can easily create a bootable USB. वो सिंपल स्टेप होते हैं. I will give the link below in a description for download the Ubuntu ISO. So वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके रूफोस के थ्रू आप इसका USB bootable पेन ड्राइव बना सकते हो. सो आई हैव करंटली विंडोज़ OS, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मैं इसे बनाने जा रहा हूँ लिनक्स का सर्वर, क्योंकि मुझे कुछ प्रोग्राम टेस्ट करना है अपने मशीन पे. सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग, आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ओनली फॉर हेल्पिंग पर्पस फॉर माई फ्रेंड्स हु इज़ वर्किंग इन IT और डेवऑप्स टीम, लाइक जो आप खुद से इंस्टॉल करना चाह रहे हो. सो लेट्स स्टार्ट इट, वी डोंट वेस्ट एनी काइंड टाइम. जस्ट सो सिंपली बस मैं पेन ड्राइव कनेक्ट कर देता हूँ. ये हमारा पेन ड्राइव कनेक्ट हो गया है. मेक श्योर दैट disk is showing on your computer, so that Ubuntu is coming. I'm using this version. So simply I'll going to restart my desktop server. So मैं बस रीस्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से. Just restart and press the BIOS key, del button. जनरली जो असेंबल्ड PCs होते हैं उसमें डेल की ही बायोस के लिए होता है, फॉर वेयर यू शेड्यूल द बूट मेन्यू. सो ये हमारा बायोस सेटिंग ओपन हो चुका है, एंड फ्रॉम हेयर आई एम गोइंग इन बूट मेन्यू. In boot menu I'm just setting the priority. This is my Ubuntu disk, and this is my Ubuntu disk, and this is current hard disk जिसमें हमारा Windows installed है. So I'm going here to simply prioritize the Ubuntu disk. So यहाँ पे आप एंटर करोगे. Maybe you get the different BIOS setting or maybe different options. सब में क्या होता है कि जो आपका F कीज़ है, फंक्शन कीज़, इसके थ्रू वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ अप एंड डाउन, जो कि आपको इस साइड टास्क बार में दिखेगा. मेरे पास दूसरा है, सो इसका अलग है सेटिंग. तो जस्ट सिंपल क्लिक ऑन दैट विंडोज़ एंड आई एम गोइंग टू चेंज द प्रायोरिटी. ये हमारा उबंटू का है, तो मैं इसे प्रायोरिटी 1 पे करूँगा. जस्ट सिंपल टू एंटर दैट. सो एज यू कैन सी दैट प्रायोरिटी ऑफ द डिस्क इज चेंज्ड नाउ. दैट प्रायोरिटी 1 इज कमिंग बाय USB UEFI, and the second option is my current SSD drive, which is Windows. So I'll just click F10 for the save BIOS setting. जनरली F10 ही होता है. Meanwhile you can see the help button is here, so I just press the key, that F1 F10. So as you can see that here pop-up is coming for save configuration and exit. So I just simply clicked on yes, and now it's restart to booting with the help of my USB drive. So it will take around 1 to 2 minutes. Yeah, it's coming, क्योंकि when we are changing our boot sequence. And now click on the try or install Ubuntu. Just enter it, press the enter button. So जब हम प्रायोरिटी चेंज करते हैं, सो लाइक योर सर्वर और द मशीन इज restarted.
So now as you can see, the Ubuntu OS is loading. It's loading. If you are new here on my channel, please subscribe this channel, hit the bell icon to get the notification, and comment if you want any help regarding the Linux, Ubuntu, or for the cybersecurity related function. We will here to help you free of cost. I will make sure I will make the video on your topic which you commented. Please support us to do continue and make the video. Yeah, so here as you can see, the welcome to Ubuntu that I panel is coming. It's a preparing Ubuntu OS Windows uploading. Here few steps are coming. We will finish it. It will take only 1 to 2 minutes. And one more thing I'll strongly suggest, if you are installing the Ubuntu, so just disconnect the internet from your PC or laptop, so it will like fastly boot on your laptop or PC. जैसे ही आप जैसे इंटरनेट डिस्कनेक्ट करोगे, so it's not going to connect with the online server or online patch update. So just as you can see here, choose your language. So I simply यहाँ पे मैं select करूँगा English. So just next, and the accessibility option is coming. So I'm going to skip it generally. Click on next. Here the keyboard layout is coming in India, generally coming like English UK keyboard. English UK I'll select it and click on next and see. As you can see, I am disconnecting my internet because अगर internet रहेगा तो ये auto update, patch update and many functions are coming with the help of internet. So I strongly suggested do not connect with the internet while you are installing the Ubuntu OS. So simply here click on next. Here select install. If you have anything like related to panel or links, so go with the try Ubuntu. Click by default go with the install Ubuntu. Just select automated installation. It's a like file path, so we don't have any file path. I'll suggest the interactive installation. Just click on the default section. It's actually asking to installation start with default or extend selection. So I suggest you to default selection, जिससे आपका फास्ट हो जाएगा. ये वाईफाई एंड ग्राफिक्स के लिए पूछ रहा है. एज यू कैन सी आई एम यूजिंग 4080 GPU in my server, so I suggest you to install it if you are using any kind of GPU in your PC. So just click next. It is take time around 2 to 3 minutes. So see, this is the most important step. अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो हार्ड ड्राइव है जो फंक्शन करेगा, आप बूटेबल डुअल बूट बनाना चाह रहे हो, सो जस्ट गो विद द इंस्टॉल उबंटू अलोंग साइड विंडोज बूट मैनेजर. और अगर आपको इरेज करना है लाइक कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में सिर्फ और सिर्फ उबंटू ओएस ही चाहते हो, तो जस्ट गो विद द इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू. डिस्क्लेमर इज हेयर बिफोर erasing your disk, please take the backup for all files and important data from your computer, because after erasing the disk you would not able to access any kind of data in your machine. So I am here going to install a fresh Ubuntu OS in my lab machine. I don't have required Windows because I'm not working on that. So just click on erase disk and install Ubuntu and click on next. Here you need to put your name, computer name and password and confirm the password. Here I'll putting my name, that is 1256. So it's auto generated your computer name and your username. So I'm just enter my name and here we go to create the password. Just check out. Just select on the map. So just select your location on map, so it's automatically
detect your location and time zone, which help to give your the calendar and time. See, I'm selected India, that 17 December and 6 p.m. So just click on next. See, that's giving you a review of your choice, what you were selecting on this time of period, like what is your partition going to create a FAT32 file, and this extension for use for, that is the disk which is used to install the OS, and just simply click on install. It will take around 3 to 4 minutes to install the OS on your machine. It's a copying, filing, installing the system. अगर आप लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहे, इसका मतलब कि ये आपकी नीड थी, आप इंस्टॉलेशन करना सीखना चाहते थे, एंड होपफुली आपने उबंटू इंस्टॉल करना सीखा विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल बडी ANA। हम और भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ गिव मी मोटिवेशन विद द लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो इन कमेंट बॉक्स कि आपको और रिलेटेड टू लिनक्स और एनी काइंड ऑफ डेवऑप्स रिलेटेड थिंग्स क्या हेल्प चाहिए। वी विल हेयर टू हेल्प यू, आवर टीम विल हेल्प यू एब्सोल्युटली। हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं JNAI के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि JNAI कैसे काम करती है, एंड उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे न्यू AI एजेंट्स जो कि हेल्प करेगा आपको आपके वर्क फ्लो को ऑटोमेट करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।